Hello students, good evening and welcome to EduTab. I'm Surbhi and this is Perspective 360 Degree, where we cover the most important topics from current affairs for the Phase 2 examination of your syllabus. Also, we teach you descriptive writing side by side, and we take your answers and evaluate them in the YouTube comment section entirely free of cost. Welcome to this session. Welcome to the second class of Perspective 360 Degree. First of all, let me know in the chat section if the audio and video both are clear to you. Just send a thumbs up. Yes, Chetak, hello. Prototype, Aniket, welcome back, all of you. Can you hear my voice? Am I audible to you? And is the video clear? All right, all right. So yes, hello everyone. I will take your names one by one in the towards the end. Thank you for such an overwhelming response that you have given to the series. The first lecture regarding central bank digital currency. It received more than 200 comments, more than 200 answers and responses have come from your side. So thank you for that. Just stay tuned and keep practicing on the same pace. You will see an amazing level of improvement in your preparation. Just there are two things that I need to tell you here before I proceed further. There are many students out of you who have faced problem with YouTube, with posting answers on YouTube. See, first thing, if you're trying to copy your answers directly from a Word file to the YouTube comment section, YouTube somehow is not allowing that. So you can write your answers in Word, but copy it from some note application, notepad or anything else. Copy it somewhere else and then copy it to YouTube comment section. Secondly, make sure that the answer that you're trying to post is the final answer, because if you edit your answer, then your original answer will not be visible and no response from your side would be visible to us. This is a glitch that we have seen in YouTube. So only post your final answers and don't copy from Word. So that's all from my side. Let's see what is the topic from for today. You've obviously clicked on the thumbnail, so you know the topic. It's Agritech Revolution. Is it high time for Agritech revolution? Is it the right time or is it high time? So this is a question you will be able to answer towards the end of this video, and I will ask this question from you that yes, is it high time for Agritech revolution? And yes. So see, recently, if you have been following newspapers, this was a news that we all saw. All the newspapers covered it, from the Hindu, Indian Express, PIB also covered it. So in news is UNDP, that is United Nations Development Program, India, that is UNDP's India branch, partners with NABARD to boost data-driven innovations in agriculture. This is very important here. The second news that we have seen is a little bit old, but it is very much related. And for our phase 2 examination, it does not matter if a news appeared once or twice. If some topic has been appearing consistently month after month, then that becomes important for your syllabus. So here is very important snapshot from PIB. If you look at the update from Niti Aayog, this is from April. It's old, but the question, the topic that we are discussing today is very important. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog and United Nations Capital Development Fund, the full forms are given here, team up to make India global agri-tech leader, expand innovations to developing economies. So wherever Niti Aayog has its eye on, be sure that you will see that question in your exam, whichever exam you're sitting for. If there is a descriptive part to it, you will definitely see that question. So Niti Aayog is there, the part of Niti Aayog, that is Atal Innovation Mission, which is led by Niti Aayog, that is there, and UN is involved. So definitely this becomes a very hot topic for you. Now let's look at relevance of this topic, that is Agri-Tech Revolution. We are covering Agri-Tech Revolution from both of these, since these both are a part of Agri-Tech Revolution itself. So Agri-Tech would be relevant as part of your syllabus of agriculture. So if I talk about RBI Grade B, in the Indian economy part, that is under paper 1, economic and social issues, if you look at the Indian economy part and you look at Indian agriculture here, so there are all the three sectors covered: industry, agriculture and services. So under Indian agriculture, they have been asking pretty old questions. So the next question, that is in 2024, that we expect is around Agri-Tech Revolution. Most importantly, NABARD, since this is a topic related to agriculture, we have taken this on purpose since NABARD Grade A is nearing. So the topic here is
relevant in paper 2, that is economic and social issues again. Agriculture, characteristic status. Technical and institutional changes in Indian agriculture. So technical changes in Indian agriculture, here it will fit in. Secondly, since NABARD has signed a memorandum of understanding with UNDP, so here in non-institutional and institutional agencies in rural credit, here also it will have its relevance. For SEBI, direct relevance cannot be seen, but definitely stick to this video. It will increase your knowledge. It can be asked in English writing skills, but we are not guaranteeing anything. But definitely stick to this video. It will expand your horizon. So now, as always, if you think that you can frame a good question on Agritech revolution, let me know that in the chat section. What question can be asked from Agritech revolution? The first thing can be asked is, what is the definition? Also, I'm looking at the chat section side by side. So if you have anything in your mind, just let me know there. First thing, the definition of Agritech revolution. How can it benefit present agriculture? If it can benefit present agriculture, that means there are problems with agriculture sector at present in India. And if it is so beneficial, if Agritech's revolution is so beneficial for your country, then are there any problems involved on the way? Why are we not adopting technology usage in agriculture just tomorrow itself or today itself? What are the problems involved? And if there are any problems involved, has the government done anything about them? Has the government launched any schemes or initiatives? And if you are sitting as an aspirant there, what is the way forward according to you? What are the solutions for using agricultural technology in our country? So yes, I'm waiting for your responses. All right. So I'm waiting for your responses. If you have a mock question, a sample question in your mind with regards to Agritech revolution, by that time I'm displaying the question here. Today we'll keep it very simple. But remember, the content that you will get here in Perspective 360 degree, you will not get it anywhere else. Our team experts, they sit day and night to curate this content, and the facts that you will learn with me today are not present anywhere else. So definitely, after watching this video, download the PDF that will be available on our Telegram channel after this lecture and go through it once again. So yes, one question has come up. Anmol says that how Agritech revolution can make India a global leader in agriculture sector. That is very good. How agri sector can take benefits from tech. Rahul says that. So yes, Souvik, I'll take your question later, how it will help the poor farmers. Amazing. So yes, similar lines are asked in the examination. Big themes or big concepts will be asked as questions. Small things will not be asked. Small things have to be used by you to embellish your answer, to enrich your answer. So look at this expected question. Discuss in what ways can the use of technology transform agriculture sector in the country, and answer it for 10 marks. As you can see, this question just has one part. That means it is going to be a short question which has to be answered in 400 words for 10 marks. If it is asked in essay, obviously the word limit will vary, but understand the concept with me today, and no matter which exam you're sitting for, you will definitely have the right content available with you. So let me share with you the answer blueprint that we follow at EduTab. Here is the question. We divide our answer into three parts, that is introduction, main body and conclusion. What do we write in these three parts? I will take you through all three of them. Now I have the question again. Also, you can download this blueprint with the PDF file that you will receive. So don't worry about the nitty-gritties of it. So discuss in what ways can the use of technology transform agriculture sector in the country. Answer for 10 marks, that is 400 words. The first thing that you have to do is, okay guys, we are pausing here for just 1 minute. All right, so let's move further. I think there was a problem with the screen, but I did not. All right, ma'am, please reduce PPT size. All right, now is it fine? Now is it fine for all of you? All right, so let's get back to our discussion. And if you encounter any such problems, just let me know beforehand, okay?
So now it's fine. All right, all right. So discuss in what ways can the use of technology transform agriculture sector in the country. First of all, you've not missed out on any content behind, and you will get this in the Telegram channel. So don't worry about missing out on anything. Now we are beginning. The first thing that we have to do is we have to write an introduction. To give you a brief overview, in the introduction, we talk about the topic that is mentioned in the question. And when we talk about the topic, we do not give straightforward definitions only. That looks very bland. We give recent current affairs, we give recent data that we have, recent reports that we mention in the introduction, so that the examiner gets a feeling that we are well read. Then in the body part of the answer, we move towards the actual answer, and then we end with a conclusion or a way forward. So first we'll write an introduction. What you have to write there is talk about the importance of agriculture sector. Now I'm very well aware that you all know what is the importance of agriculture sector. If you don't know, just learn about what contribution it makes to our GDP, how many percentage of people are employed in agriculture sector, whether these are rural, urban. Just these facts, just one type of data will be enough. Don't worry about remembering a lot of information. So data and facts necessitating the need of technology in agriculture. Once you highlight that agriculture is important for the country, second thing you have to create is you have to tell the examiner that why and how Agritech can bring a revolution in our country. So that has to be developed with linkages to the body part. Now moving on to the body part, we'll straight away answer this question, that is, what ways can the technology transform agriculture sector in the country? That means how can Agritech benefit the country? That means benefits of using technology in agriculture, and we will write examples also. We'll write some names of technologies that we have seen in current affairs. Then finally, conclusion, we'll also say what are the problems that why these technologies are facing or these people are facing, and then we'll give a way forward. All right, I hope the layout is clear to you till here. Yes, I appreciate all the questions, all the sample questions that you have been sharing in the chat section. I hope the layout is clear. And now moving on to writing our introduction. Let's talk generally about the agriculture sector. To give you a brief overview, see, India is known as an agrarian economy. इंडिया को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम पीपल दे आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. सो अराउंड 50% ऑफ पीपल और इवन मोर देन दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. And if you have to remember some data, just remember that agriculture contributes around 16.5% to GDP. अब ये जो data है, this will change every year. So before sitting for your phase 2 2024, आप अपना ये जो data है या NABARD से पहले भी अपना ये data update करके जाइए. All right. So can we say that agriculture is the backbone of Indian economy? Yes, we can say that. So yes, it is the backbone of Indian economy. This can be your first line in the introduction. Then you can say that a lot of people are employed and 80% of rural women are employed in agriculture. It is the largest source of livelihoods, employing 80% of rural women, and it contributes to around 16.5% of India's GDP. So here you have established the importance of agriculture. Now we'll also talk about some problems in just one line so that we can establish the need of agricultural technology. Now the problems associated with agriculture, they are very simple. First, you have depleting groundwater. You have the problem of monsoon, erratic monsoon. You have the problem of global warming, that is climate change. Your crops, they require only a given range of temperature in which they can grow and they can bloom. So climate change impacts Indian agriculture, erratic monsoon, depleting groundwater, reduced level of rainfall, droughts, famines, all this impacts Indian agriculture. On the other hand, if I talk about the organization, it is largely an unorganized sector. बहुत ज़्यादा unorganized है, money lenders बहुत ज़्यादा involved रहते हैं, intermediaries are very much involved, and the government is not able to help the farmers or this agriculture sector as much as it wants to. तो एक लाइन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है. देन वील मूव ऑन टू हाईलाइट दैट हाउ एग्रीटेक और टेक्नोलॉजी यूसेज कैन हेल्प अस solve these problems. All right, so ये problems I think आप सबको पता है. If you're a citizen of India, I'm sure you're aware of that there are depleting ground levels in our country जो कि
इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया. देन यू हैव अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कि हम बार बार वही क्रॉप्स उगा रहे हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर रहे हैं. देन देयर इज पुअर क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, हमारे पास लेटेस्ट सीड्स नहीं है, हाई यील्डिंग सीड्स नहीं है. लैक ऑफ मैकेनाइजेशन. What is the technology that you see on farms? It is tractors. 80% जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है फार्म्स में, दैट इज जस्ट ट्रैक्टर्स. उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी हम यूज ही नहीं कर रहे. वाइल यू सी लुक एट फार्मर्स इन यूएसए, दे आर यूजिंग लैपटॉप्स, दे आर यूजिंग एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग मेथड्स. उनको पता होता है कहाँ पर कितना पानी और कितने फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं. देन देयर इज हाई डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन एंड मॉनसून, रिड्यूसिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. क्लाइमेट चेंज, द थ्रेट ऑफ इनसफिशिएंट फूड फॉर द पॉपुलेशन. ऑल दीज आर थ्रेट्स. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, जिस बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं, जिस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपकी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर डिमांड ड्रिवन. अगर मार्केट में क्लोथ्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, गाड़ियों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड बढ़ जाती है, वो इंडस्ट्री ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देती है. बट एग्रीकल्चर, इट इज सप्लाई ड्रिवन. फार्मर्स एमएसपी की वजह से ईयर ऑन ईयर क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं और वो मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, हमारे गोडाउन्स में पड़े रहते हैं. इफ यू वांट ऑर्गेनिक फूड, इफ यू वांट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, कैन यू फाइंड देम इजीली और एट अ चीपर रेट? यू कांट. तो डिमांड ड्रिवन नहीं है ये सेक्टर. दिस सेक्टर इज बेसिकली सप्लाई ड्रिवन. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको टेक्नोलॉजी की मदद से एड्रेस हम करेंगे. सो विद इन लाइक 3 लाइन्स मैक्सिमम आपका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा एग्रीटेक के बारे में भी लिखने वाले हैं. ऑलराइट, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स रही. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वांट यू टू लुक एट जस्ट दिस पार्ट राइट नाउ. इस पार्ट को देखिए. यहाँ पे आपके फार्म इनपुट्स का पार्ट है. सेकेंडली, फार्म इनपुट्स जब आपने दे दिए, सीड दे दिया, मैन्योर दे दिया, वाटर दे दिया, देन यू हैव फार्मिंग गोइंग ऑन, कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग गोइंग ऑन, दैट इज द सेकेंड स्टेप. उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप. देन यू हैव पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग. आलू के चिप्स बनते हैं, टोमेटोज की केचप बनती है, वॉट एवर प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन. देन रिटेलिंग एंड सेलिंग, दैट्स द फिफ्थ स्टेप हियर. एंड देन फाइनली इट रीचेस टू कंज्यूमर. तो जब भी आपको टेक्नोलॉजी यूसेज इन एग्रीकल्चर की बात की जाएगी, यू कैन ऐड टेक्नोलॉजी एट एनी ऑफ दीज स्टेप्स. अगर हम एक एक स्टेप की भी बात करें, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी, इधर एक टेक्नोलॉजी, इधर एक, इधर एक, सो easily you have 6 ways in which Agritech revolution is here and it is need of the hour. कैसे benefit कर सकता है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? You can have 6 direct points here itself. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज को उठाएंगे and we'll see कि कैसे Agritech can be beneficial for our country. तो पहले हम क्या बात करते हैं? हम एग्रीटेक की बात करते हैं. व्हाट इज एग्रीटेक? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टू बेनिफिट पीपल. पीपल क्या हो सकते हैं? आपके फार्मर्स हो सकते हैं, आपके सप्लाई चेन्स या आपके कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं. एंड ऑब्वियसली द पीपल हु आर सप्लाइंग दिस टेक्नोलॉजी विल बी एंटरप्रेन्योर्स. सो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. आई थिंक इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली, हमारा जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज में, जहाँ पे मोस्टली फार्मर्स रहते हैं, वो बढ़ गया है, जिस वजह से एग्रीटेक भी बढ़ रहा है और बढ़ने की आगे भी क्षमता रखता है. देन व्हाट कैन बी द एम्स ऑफ एग्रीटेक? इफ यू गो बैक, टू इम्प्रूव यील्ड. जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की है, सारा का सारा एग्रीटेक में सॉल्व हो जाएंगी. इंप्रूव यील्ड, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंक्रीज यूज ऑफ मैकेनाइजेशन. ऑल दिस कैन बी देयर विच विल बी टॉक्ड अबाउट इन द बॉडी पार्ट. ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है. एंड फाइनली, जो हमने अभी न्यूज देखी थी कि अप्रैल 2023 की न्यूज आ रही थी कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएनसीडीएफ, उसको आप यूज कहाँ करेंगे? उसको आप अपने इंट्रोडक्टरी लाइंस में ही यूज करेंगे. यू विल से दैट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीटेक in India, AIM, NITI Aayog and UNCTF have jointly launched a white paper aimed at making India a global leader in agri-tech innovation. So don't forget, आपने यहीं पर अपना जो फैक्ट आप याद कर रहे हैं करंट अफेयर से अपनी इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप करंट अफेयर्स पढ़ के आए हैं.
Now we are moving on to the let's delve deeper section. Let's delve deeper segment में हम लोग body paragraph पे जाते हैं. हमारा introduction done है, हमने agriculture और agritech दोनों अच्छे से समझा है. Before moving on to the body part, just let me know in the chat section if you have any doubts or additions to make from your side. CS the protos. All right. Okay. So I think it's clear to all of you. If it is clear, then we'll move on to the next segment, and just let me know in the chat section if we can move ahead. So condition of agri sector is bad. Farmers are poor, uneducated. Yes, prototype. That is right. Yes, Srishti, that's right. It is relevant to SEBI in some way too, like a dedicated exchange for agriculture startups may be established just like a stock exchange for small and medium enterprises. So, all right, Manuri. So, let's move on to the second part. See, when we study agriculture, we study it in a very bland way. 4 problems आ गई, 4 solutions दे दिए, वही answer बहुत time से चल रहा है. But our aim at EduTap is not to give you the old approach or the old content. We do a lot of research behind this content, and our aim is to take you to the final list. आपकी selection करवाना है. So stick to the body part, stick to this video, and you will realize that how important role does this initiative play in your selection. So now let's move on to the body part. Here we'll talk about benefits of using technology in agriculture with examples. तो एक बार हम बेनिफिट्स देख लेते हैं, जो 6 बेनिफिट्स हम लोग लिखने वाले हैं, एंड देन वील अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. द फर्स्ट बेनिफिट कैन बी, पहला बेनिफिट क्या होगा, आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी या जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फार्म्स इज नॉट गुड. ठीक है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. सेकेंड चीज हमने क्या बात की थी, आर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये सब बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है. सो क्लाइमेट चेंज के साथ भी डील कर सकता है, एंड फूड सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर सकता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज वेरी हाई. स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन एंड आउटपुट मार्केट लिंकेज. आपका जो अनाज है वो काफी गोडाउन्स में सड़ता रहता है, बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है. देयर इज नो स्ट्रीमलाइनिंग इन सप्लाई चेन. प्लस द फार्मर्स ऑल्सो डू नॉट गेट एडिक्वेट benefits on time or any adequate facilities on time. Then you have changing consumer behavior. जो हमने demand and supply की बात की थी, that agriculture, it is a supply driven sector, whereas it should be a demand driven sector. तो ये क्या है, addressing changing consumer behavior. ये हम टेक्नोलॉजी की मदद से consumers की डिमांड को समझ सकते हैं और एग्रीकल्चर में इनकलकेट कर सकते हैं. Then accessible services कहाँ, in farmers को, if they need internet, if they need tractors, if they need drones, तो accessible services हमें टेक्नोलॉजी की मदद से, प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से प्रोवाइड की जा सकती है. एंड फाइनली which comes with any industry is the economic benefit. आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, it should be economically beneficial. Financial remuneration अच्छा होना चाहिए उस सेक्टर का. So these all will be the benefits that we'll address. Now first of all, let's look at increase in agricultural productivity. So I'll keep highlighting all the benefits that we are studying ताकि आपको idea मिलता जाए. All right. All right. See, all the doubts regarding the previous video will be taken at the end of this class. उसके अलावा कोई भी doubts आ रहे हैं, आप end of the class तक wait कीजिए और उसके बाद अपने comments दीजिए. So when we talk about first benefit of increased agricultural productivity, I'm sure you've heard about the green revolution. Green revolution में क्या हुआ था, high yielding varieties of seeds था. Wheat का जो पुराना seed था वो बहुत ही कम आउटपुट देता था, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड था वो बहुत ज्यादा आउटपुट देता था. तो अब क्या है, जीएम क्रॉप्स. वी हैव बायोटेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम लोग जीएम क्रॉप्स यूज कर सकते हैं. वी हैव माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस जिस वजह से हम जो अपनी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. So Agritech's triple bottom line, addressing climate change, food security and economic growth. How? High yielding varieties and genetically engineered seeds. For example, there is this example of BT cotton also. They lead to efficient use of pesticides, water, etc. and they can increase yields. Now moving on to the second one,
Addressing food security and climate change. Food security, as I told you, हमें बहुत ज़्यादा grains की requirement है अपनी बढ़ती population को feed करने के लिए, और healthy grains, organic grains की requirement है. And climate change. I want you to focus on climate change, and this is a very important initiative of Indian Council of Agricultural Research. ये 2011 का initiative है. It is known as NICRA, National Innovations in Climate Resilient Agriculture. यहाँ पे क्या करते हैं? Climate resilient सीड्स आर डेवलप्ड. आपके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, आपकी ICAR की लैब्स हैं. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग ऑन सीड टाइप्स ऑफ सीड्स विच आर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंजेस, जो कम पानी में ज्यादा हीट में भी उग जाए. सो दिस इज एन इनिशिएटिव लेड बाय ICAR. इसके अलावा क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर सकते हैं. व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग? इफ आई टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, प्रिसीजन फार्मिंग है आपको एक सॉइल के पैच का या आपको एक फार्म लैंड का एरिया का वो बता देगा व्हाट इज द सॉइल क्वालिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, हाउ मच अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर इज रिक्वायर्ड. तो प्रिसीजन मतलब, प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब फार्मिंग हो रही है बट इट इज यूजिंग मोर प्रिसाइज इनपुट्स एज कंपेयर टू बिफोर. तो इससे क्या होता है, एक तो जो आपका क्रॉप है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाता है. सेकेंडली, यू कैन एक्चुअली सर्व टू द changes of heat, weather, climate, anything that comes in, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. नाउ निकरा जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड डिकरा. इट इज एक्टिव इन तेलंगाना राइट नाउ एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम. सो डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, डेटा रिगार्डिंग किसी भी फार्म का सॉइल हेल्थ, कोई डिजास्टर से इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला है, कितना ज्यादा सैलिनिटी है किसी सॉइल का, कितना ज्यादा मॉइस्चर लेवल है. सो दिस इज रजिस्टर्ड अंडर दिस पोर्टल. ये जो डेटा है UNDP और NABARD गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर इंश्योरेंस और पॉलिसीज के बेनिफिट्स फार्मर्स को दे सके. सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, निकरा एंड डिकरा, दीज थ्री आर द वर्ड्स you have to use when you talk about food security and climate change. The third is streamed supply chain and output market linkage. स्ट्रीम्ड सप्लाई चेन एंड आउटपुट मार्केट लिंकेज, यानी कि जब आपका जो फार्म प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंच रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रीचिंग आउट टू कस्टमर्स, क्या वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है? ऐसा तो नहीं है कि किसान के घर तक ट्रक ही नहीं पहुंच पा रहा है. इवन इफ अ फार्मर इज रजिस्टर्ड फॉर द क्रॉप and if he is living in an area where there is no road, how will we ensure supply chain? या लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो इंश्योर नहीं हो रही, अल्टीमेटली ही हैव टू गो टू द मंडीज टू सेल ऑफ हिज क्रॉप. तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से आप एड्रेस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? लुक एट दिस पोर्टल और दिस एप्लीकेशन कॉल्ड डी-हार्ट. डी-हार्ट के दो फायदे हैं. एक तो ये फार्मर्स को मेन्योर और सीड्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली टू फार्मर्स, ऑलराइट, एट अ वेरी इकोनॉमिकल रेट. ये ऐप की तरह काम करता है, सो फार्मर्स कैन कंपेयर द प्राइसेस ऑल्सो. सेकेंडली, what we require as consumers, we require organic fruits and vegetables, we require cheaper fruits and vegetables, flowers and other inputs. We want कि किसान जो उगाए वो सीधा हमारे घर पे आए, कोई पेस्टिसाइड उस पे स्प्रे ना हो, कोई दवाई उस पर ना लगी हो, and we should be getting it at cheaper rates. So platforms like D-Heart have made this successful. So it is a tech-enabled bridge that can bring together farmers, micro-entrepreneurs, aggregators, traders and agri-related service providers. Now coming to the most important part, that is address changing consumer behavior. अब ये ninja card देखिए, and even if you don't know ninja card, I'm sure you must have heard about Country Delight. Country Delight क्या करता है? वो कहता है farm fresh, from farm to your home. They sell milk, they sell coconut water, they sell n number of things. वो कहते हैं फार्मर के घर से या फार्म से आपके पास लेकर आएंगे. So what is Country Delight? It is a form of technology. They are entrepreneurs जो कि आपके लिए इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, और आपका जो काम है, आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है और बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है. वॉट एवर यू डिमांड प्योर मिल्क, दे विल प्रोवाइड यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, या जो डेयरी इंडस्ट्री जो इंसान रन कर रहा है. ऑलराइट, वैसे एक निंजा कार्ट है, दे प्रोवाइड यू विद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब इससे फायदा क्या होता है? दे प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स के एक्सपेंसेस बच जाते हैं, कंज्यूमर्स को डिमांड के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है. सेकेंडली, फार्मर्स को हायर प्राइसेस मिलते हैं, जो कि पहले क्या होता था, मिडलमैन ले जाते थे. सो एड्रेसिंग चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर हैज बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी.
फिफ्थ वन एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना होगा, आपने बहुत चीजें एज अ सर्विस सुनी होंगी. आई एम टॉकिंग हियर अबाउट फार्मिंग एज अ सर्विस. फार्मिंग एज अ सर्विस का क्या मतलब हुआ? कोई किसान है जो कि ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता बट वो रेंट पे तो ले सकता है. कोई किसान है जो डी वीडिंग नहीं करना जानता या नहीं करना चाहता, ही कैन हायर समबडी फॉर लेट्स से one day to carry out de-weeding on his farm. उसको हमने क्या बोल दिया? service. So services can be provided to farmers by companies at very cheap rates, जिसके लिए फार्मर्स को वो मैकेनाइजेशन, कंप्लीट मैकेनाइजेशन की भी जरूरत नहीं है. दे डोंट हैव टू बाय ट्रैक्टर्स और डीवीडिंग मशीन्स और सीडर मशीन्स. दे कैन गेट देम ऑन रेंट और गेट somebody else to provide these services. So as the snapshot says, how farming as a service is revolutionizing न्यू एज एग्रीकल्चर. इसका काम कहाँ है? ऑफरिंग सर्विसेज लाइक ऑन डिमांड मशीनरी रेंटल, फील्ड लेवलिंग जो कि आपको क्रॉपिंग में जरूरी होता है, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, दिस इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी. सो द फार्मर्स डोंट हैव टू वरी अबाउट हैविंग देम परमानेंटली. नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल वन जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्टर के लिए, दैट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको फार्मर के लिए चाहिए, आपको इंटरमीडिएरी, दैट इज the person who's giving you Agritech, technology in agriculture, and you want it for the consumers as well. तो consumers के लिए तो हमने देखा जब direct linkages होते हैं consumers को ultimately benefit होता है. Now what can be the economic benefits? So investors के लिए, entrepreneurs के लिए, agricultural community और सारे stakeholders का फायदा है. For example, if I talk about D-Heart की हमने बात की थी पीछे. यस, डी हार्ट क्या है? सीड्स टू मार्केट. जब से सीड सो किया जाएगा तब से लेकर मार्केट तक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी. सो डी हार्ट का एक डेटा है, इट हैज एनेबल्ड अप टू 50% increase in farmers income as a result of savings in input cost, increased farmer productivity and better price discovery. Finally, NASSCOM का एक डेटा है जिन्होंने बोला है कि अभी के लिए 450 एग्रीटेक स्टार्टअप्स 2022 तक ही स्टैब्लिश हो गए थे इंडिया में, स्टार्टअप्स विच वांट टू वर्क फॉर द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. तो यानी कि बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, और ये जो है 25% हर साल जो स्टार्टअप्स की तादाद है वो बढ़ रही है. सो इट इज़ अ रियली अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर दिस एग्रीटेक सेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स में वहाँ पर लिखना है, फार्मर्स की साइड से, एंटरप्रेन्योर्स की साइड से और कंज्यूमर्स की साइड से भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिखने हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट दैट इज कंक्लूजन, इस क्वेश्चन का हम कंक्लूजन कैसे बनाएंगे जहां पे हमें चैलेंजेस नहीं पूछे गए, हमें वे फॉरवर्ड नहीं पूछा गया. बिफोर मूविंग ऑन देयर, जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. Yes, prototype, that is right. Online trading of agriculture products. Yes, Anmol, you can talk about this. Agri-tourism. Deepak, explain agri-tourism a little more. I understand what do you mean, but tell the fellow aspirants. All right. So if it is all clear, then we can move forward. Online trading of agriculture products. Yes. All right, Kshitij. All right, Jay. All right, Chetak. All right. सो लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने लिखना क्या है. अब देखिए, नाउ यू रिटन द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीटेक, यू टॉक्ड अबाउट बेनिफिट्स. अब थोड़ा सा लाइटली बताइए कि ये अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा. इतने ज़्यादा MOU साइन हो रहे, इतने ज़्यादा अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, नीति आयोग ने वाइट पेपर डाल दिया है, बट वाई आर दीज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. हल्का सा कॉमा करके एक लाइन में चैलेंजेस दीजिए. डिस्पाइट ऑफ द अबव बेनिफिट्स देयर आर सम चैलेंजेस on the road to adopting or on the road for agritech revolution in our country. विज करके लिख दीजिए what are the challenges. अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है. एग्रीटेक रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो भी सर्विसेज टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हैं काफ़ी फार्मर्स के लिए. देन देयर इज़ लिमिटेड मार्केट एक्सेस. अगर एक फार्मर अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर ले, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो मार्केट के साथ जो उसका एक्सेस है वो बहुत कम है. ऑलराइट, तो उसको उतना फायदा नहीं हो पाता जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है. देन देयर आर फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. इफ आई टेल यू 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इन इंडिया इज कंप्राइजिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स ओनली. तो हमारे जो फार्म्स हैं वो बहुत छोटे हैं. कई फार्म्स इतने छोटे हैं कि एक ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता. बड़ी मशीन्स तो कैसे जा पाएंगी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए.
देन यू हैव टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड टू एम्पावर फार्मर्स. बहुत सारे फार्मर्स हैं जो डिजिटली लिटरेट नहीं है. इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है रूरल एरियाज में, आई एम श्योर अबाउट इट, बट स्टिल डिजिटल इलिटरेसी इज अ बिग प्रॉब्लम, और उसकी वजह से ट्रस्ट इज अ वेरी वेरी बिग इशू व्हेन इट कम्स टू dealing with entrepreneurs who want to help these farmers. So limited infrastructure की problem है, inefficient supply chain है, ये हमने पहले भी देखा था, and there is lack of collaboration. फार्मर्स में, गवर्नमेंट में, सिविल सोसाइटी यानी कि एनजीओज में जो उनको हेल्प करना चाहते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर विच कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है. आपके स्पेस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 100 स्टार्टअप्स जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई 1 महीने में शुरू हो गए, और एग्रीटेक में कितने स्टार्टअप्स है? जस्ट 450, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट कब से एग्रीटेक की बात कर रही है. तो यहाँ पर 1 महीने में इन द स्पेस सेक्टर 100 startups came up, and in like over a span of so many years we just have 450 startups for agritech in our country. So that is the problem, क्योंकि lack of collaboration है और ये सब issues है. So you can talk about these issues, separate paragraph मत बनाइएगा, comma comma करके लिखिएगा. Despite of our benefits, these are the issues. And in the concluding lines, थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा डेटा दीजिए कि अगर एग्रीटेक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है इंडिया में तो शायद ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 भी आ जाए. देन देर आर सम सोल्यूशंस, वे फॉरवर्ड है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव कीजिए, पब्लिक डेटा का एक्सेस दीजिए. कितने फार्मर्स हैं जो स्मॉल होल्डर्स हैं, कहाँ कहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर लास्ट माइल लिंकेजेस की रिक्वायरमेंट है. देन डिजिटाइज लाइसेंसिंग रेजीम्स, लाइसेंसेस की प्रॉब्लम होती है एंटरप्रेन्योर्स को, जो एग्रीटेक इनोवेशंस भी ला रहे हैं, स्टिल देयर इज प्रॉब्लम. एंड ये बहुत ही इनोवेटिव है, ये आप डायरेक्टली एक वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं. Establishment of facilitation center for agritech at local as well as global level. मान लीजिए हर गांव में एक फैसिलिटेशन सेंटर हो फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. वी हैव कृषि विज्ञान केंद्र अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री. वैसे ही एग्रीटेक सेंटर्स लॉन्च कीजिए जो कि फार्मर्स को हेल्प करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हमने पीछे पड़ी हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. देन फाइनली जो हमने फर्स्ट स्क्रीनशॉट जहां से हमने ये अपना वीडियो शुरू किया था, आई होप दिस इज क्लियर कि यूएनडीपी और नाबार्ड का एमओयू साइन हुआ है टू यूज डेटा ड्रिवन इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर फॉर स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए. तो ये आप कोट कर सकते हैं इन द एंड दैट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और दिस इज अ स्टेप which can be uploaded. If this is not visible, आप PDF डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे. सॉरी फॉर दिस लाइट कंटेंट, आई विल टेक केयर ऑफ दिस इन फ्यूचर. और इसके बाद आप बोल सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0. अगर आप एग्रीटेक इन इंडिया सर्च करेंगे आपको हर जगह ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 देखने को मिलेगा. तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 20th सेंचुरी में आया था, उसने हमारे एग्रीकल्चर का हिस्ट्री जोग्राफी सब कुछ बदल के रख दिया, हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया. अब हमें क्या ज़रूरत है? हमें फार्मर्स इनकम इंक्रीज करने की ज़रूरत है, हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल, क्लाइमेट रेजिलिएंट और हैप्पी फॉर फार्मर एग्रीकल्चर बनाने की ज़रूरत है. वो आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 से. सो द फ्यूजन ऑफ एग्री साइंस एंड डेटा साइंस इज मेकिंग हेड्स टर्न, एंड ऑल दीज चेंजेस कैन वेरी वेल लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0. ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लैंग्वेज में, बहुत ही क्रिएटिवली अपने कंक्लूजन्स हम लिखेंगे. वी विल नॉट लीव आवर कंक्लूजन्स विदाउट एनीथिंग क्रिएटिव इन आवर आंसर्स. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I think we have justified this discussion. Just to remind you, हमने ये question discuss किया है, discuss in what ways can the use of technology transform agriculture sector in the country. For 10 marks, send your answers to us by Monday 5 p.m. Monday 5 p.m. तक हमें अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजिए. We have received more than 200 answers, and before I took this session with you, all the answers have got their views, reviews, marks, सारे answers को दिए गए हैं. So yes, we are evaluating, we are providing with free evaluation services. कोई cost नहीं है, आने वाले टाइम में भी कोई charges नहीं होंगे.
Team EduTap is motivated day and night to make sure that you make it to the final list. आपका selection होना चाहिए, ये हमारे लिए मैटर करता है. तो अपने आंसर पोस्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना पोस्ट कीजिए, एंड टेक हेल्प ऑफ दिस वीडियो. दोबारा से चाहे वीडियो देखिए और अपना आंसर जल्द से जल्द लिखने की कोशिश कीजिए. अगर मंडे तक वेट करेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा. तो सबसे पहले पोस्ट कीजिए सो दैट वी कैन इवैल्यूएट इट as soon as possible. So I'll see you again on Monday at 5 PM. हमारा ये इनिशिएटिव पर्सपेक्टिव 360 डिग्री मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के लिए लॉन्च किया गया है. I come to see you 5 PM live. All right. All right, meditation, you will get them. If you have any doubts right now, just let me know in the chat section. And if you want to reach out to us, you can contact us at hello@edutap.co.in. And this is our phone number. You can directly call us here, 8146-207-241. Thank you for today. I'm going to the doubts now. Abhinandan, sorry for now. You can resubmit it, but we are not evaluating those answers as of now. All right. So, but you can repost it. All right, you're welcome, all of you. You're welcome. Meditation, you'll get that. Although it was not implemented still. Can we resubmit the answer? Can we relate three? Kshitij, you can relate those agricultural laws only in the beneficial form. Okay. Yes, Deepak, that's absolutely right. D, Heart's process of functioning transparent. Krishna, we just have to talk about the positive side of it. All right, so depending upon current affairs, you can give examples. So thank you all of you. I'll see you on Monday at 5 PM live. Post your answers in the comment section. Srishti, not as of now. Otherwise, we'll cover farm laws as a separate topic. All right, thank you. And post your answers in the comment section as soon as possible so that we can review them.